Welcome everyone. This is the lecture number 5 inside PC core components types of ports part 2. So before going towards other ports, we will see all the ports and their connectors very fast. First of all, serial port. And it was used for computer mouse and modem. You already know the connector will be like this. मतलब जो सीरियल पोर्ट था उसमें आप देख सकते हो उसमें पिंस थी, तो उसको कनेक्ट करने के लिए उसका कनेक्टर कैसा होना चाहिए, जितनी पिंस इसमें है उतने ही होल्स इसमें होने चाहिए कनेक्टर में. सो यू कैन से योर serial port is a gender of male while its connector will be gender of female. This port is also known as RS-232 or COM port. So it is clear that serial port, connector and the device which it was connecting was computer mouse and modem. Now similarly for parallel port. Parallel port is having you can see 25 pins. 3 types of pin connectors are available: DB25, Centronics and Mini Centronics. The difference is that whenever the number of pins get changed, the types of connector will also change. तो आप इधर देख रहे हैं, इधर 25 पिन आ सके ऐसा कनेक्टर होना चाहिए. अगर 36 मॉडल का 36 पिन वाला मॉडल होगा तो ये कनेक्टर की जो साइज है वो बढ़ जाएगी. क्लियर? सो यू कैन सी दैट दिस इज हैविंग 25 नंबर ऑफ पिन्स, so the connector will be also having 25 number of pins. So you can say parallel port is having gender female because because it is having 25 number of holes, while the connector is having 25 number of pins. You can see a PS2 port. You have already seen in previous lecture. These are the ports and these are the connectors. Ports are having holes and connectors are having pins, and it was used to connect mouse and keyboard. Now next is USB. You can see these are the USB ports and these are the cables. This is the cable and the types of USB cables you can see are shown here. पहला कौन सा USB कनेक्टर फॉर पावर सोर्स, दूसरा है माइक्रो USB, मिनी USB, 8 पिन लाइटनिंग एंड USB टाइप C. जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स है उसमें आप 2 बाय माइक्रो USB यूज़ कर सकते हैं. फिर उससे छोटा आता है मिनी USB जो डिजिटल कैमरास के लिए है, और 8 पिन लाइटनिंग आईफोन्स के लिए है, और USB टाइप C नेक्सस, नोकिया और अब जितने भी फ़ोन आते हैं उसके लिए है. सो दीज आर द नंबर ऑफ USB कनेक्टर्स. दीज आर कॉल्ड कनेक्टर्स एंड दिस इज नोन एज केबल. जैसे जैसे कनेक्टर होगा उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा, अंदर नंबर ऑफ वायर्स चेंज होंगे. सो USB port was important because it was and it is important because we can connect external hard disk, printer, scanner, mouse and keyboard. You already know why it was created, just to replace other PS2 ports and old those serial and parallel ports. Next you can see Ethernet port. तो इसका कनेक्टर कौन सा है, तो RJ45 और RJ45S. इस पे जो ये जो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट टाइप का, दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टर, और ये है वायर, दिस इज कोएक्सियल केबल. और ये RJ40 और ये जो RJ45 का कनेक्टर है वो 2 और भी उसके टाइप्स हैं, बट राइट नाउ हम सिर्फ RJ45 और RJ45S पढ़ेंगे. और दिस इज Ethernet port. It is available on NIC card. और अब आप देख सकते हो कि eSATA पोर्ट जो है और eSATA P एंड eSATA
उसके लिए केबल भी अलग है। जैसे चेंज होगा साइज या फिर टाइप या फिर उसकी विड्थ, जो भी चीज़ चेंज होगी वैसे ही केबल चेंज होगा और केबल के अंदर जो जितने भी नंबर ऑफ वायर्स है वो बदलेंगे। You can see DVI port. DVI port was used for flat panel LCD monitor to compute to the computer's high-end video graphic cards, and it was very popular among video card manufacturers. और उसका पिन आप देख सकते हो. This is of female type and this is of male type. So और DVI जो पोर्ट है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है. So this is your question. Types of DVI ports you have to find out and have an understanding what are the types of DVI ports were available. This is VGA port. You can see it is also of female gender and the male gender is the connector. 15 holes are there and 15 pins are there, and it is used to connect monitor, LCD monitor, as well as projectors, those projectors who were having VGA port. Next is power connector, power cable connector. तो power cable है, what kind of gender it is? It is a male gender and the cable will be of female gender. Sorry, connector will be of female gender and this port will be of male gender. 3 prolonged plug and connects to the computer's power cable that plugs into power bar or wall socket. यानी दीवार में जो एक वॉल जो सॉकेट होता है उसमें हम इसको अटैच करते हैं, तब जाके केबल इस वाले कनेक्टर से इस पोर्ट पे अटैच होगा और ये पोर्ट कहाँ पे होगा? CPU पे. And then your PC will get electricity current. Now coming to firewire port. Firewire port के आपने देखा कि transfers large amount of data at very fast speed, connects camcorders and video equipment to the computer, and firewire in this speed travels at 400 to 800 megabits per second, and it was invented by Apple. And उसका जो कनेक्टर है उसका नाम है IEEE 1394. You can see the connector and you can see the port. So again this is of male gender and this will be of female gender because one pin is there and here hole will be available. Next is game port. It connects PC to a joystick. This is like VGA port, or you can say a parallel port, right? So but number of pins are less compared to parallel port, and the connector will be also like that of parallel port. But what was the use of game port? To connect a joystick, but now it is replaced by USB. Now coming to HDMI. What is HDMI? High definition multimedia interface. HDMI is a connector cable capable of transmitting high quality and high bandwidth streams of audio and video between devices. So HDMI is used for uncompressed digital video audio transmission to a display device like a computer monitor. यानी जो हाई क्वालिटी की वीडियो है जिसमें हाई क्वालिटी का ऑडियो है उसको हम किससे ट्रांसफ़र करेंगे? विद द हेल्प ऑफ HDMI. हाई रिजोल्यूशन की वीडियोस चलाने के लिए हमें HDMI केबल की ज़रूरत है. And you can also see HDMI connector. Now coming to sockets, these are audio, video, mic jacks, and
सॉकेट्स कनेक्ट माइक्रोफोन एंड स्पीकर टू द साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर, और इस तरह का जो ये है वो उसका कनेक्टर है. दिस इज मेल एंड दिस इज these all are female. So these are the references. You can go through these websites and you will get more information regarding the ports. So here we are finishing our ports. Thank you.